Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Hello, Rishparna. Good morning, beta. Okay, I think everything seems to be fine. Hi, Shru. Good morning, beta. Okay, so I think सब कुछ ठीक चल रहा है and there isn't any particular problem. So without a delay, let's start what we are having. पिछले कुछ दिनों से things are in better way, है ना? I mean, कल मोदी जी सिक्किम में फुटबॉल खेल रहे थे. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट किसी ने उनको बताया नहीं शायद थोड़ी दूर में से लेफ्ट से बाजू निकलने का और मणिपुर पहुंच जाने का मणिपुर इज इन वेरी नेगेटिव स्टेट 5 डे इंटरनेट शटडाउन के कारण we cannot get any latest data or video or updates but the people who know northeastern insurgencies who know northeastern problems they said they are saying that the situation is very bad तो उन्होंने मेंशन किया एंड न्यूज़ आर लाइक hello Jadu, right? So a lot of negative news that is coming from Manipur. I think the government failed itself. That is for sure. So let's discuss Manipur. थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है ना राइट जस्ट अ मिनट हाँ ठीक है so if I'm not wrong that is May 2023 to now we are at May 2026. Right? So it's been 3 years almost 24, 25, 26. And this is in 3 years में first of all अगर मैं बात करूँ तो सितंबर 2025 तक राइट हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मणिपुर गए ही नहीं थे yes September 2025 तक so almost for 2 years they ignored it then they put Manipur for 1 years for the president rule right then recently they changed the CM. CM changed. The two deputy CM were arranged. Right, he's from Methi, and these were from Kuki and Nagas. Right. So the problem is, uh, yes. Chaos in the Manipur started in 2023 May. So it's been 3 years. No, that is what we are saying. And now, first of all, the first phase of violence was something that was Meitei versus Kukizo. Right. Now, from that time onward, from last 1 month, तक अगर बात करूं 2 month तक, so Nagas were not involved into this ethnic clash. But now we can see Naga tribe also involved into this particular ethnic clash. They have advanced weapons, right? They have bazookas, they have a rocket, they have assault rifles. I mean everything, and how they are getting it, and it's not something जो कि पता है किसी को. Second thing, मतलब this is a questionable what we can say stand for our government. कि for West Bengal election, approximate 2.5 thousand CAPF battalions were what we can say deployed, right? And Manipur that is like only 200 plus. I guess 230 around. And even though when the when West Bengal election started, they called some of the particular companies from Manipur to West Bengal for the election. I mean, what if we have enough resources like this, अगर हम इतनी companies मणिपुर में अकेले वो कर दें, क्या कहना चाहिए, deploy कर दें, I don't think anybody has what we can say guts to cross these CAPF personals, right? We lost the trust of क्या कहना चाहिए मणिपुर पीपल द गवर्नमेंट अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट तो फेल रही है गवर्नमेंट फेल रही है एक्सेप्ट करने में कि यस वी फेल्ड गवर्नमेंट फेल रही है एक्शन लेने में एंड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री दैट वी द सिटीजन ऑफ इंडिया
right? We actually failed to be a good citizen of India. वो जो brotherhood की हम बात करते हैं, वो जो brethren की integrity of country की बात करते हैं, we failed as a citizen by ignoring the people of Manipur. मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट, वी शुड बी फोर्सिंग आवर गवर्नमेंट्स, वी शुड बी फोर्सिंग आवर लीडर्स जस्ट टू मेक श्योर टू टेक राइट एक्शन ऑन दिस. मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई सॉ दिस न्यूज, मैंने आज थोड़ा सा न्यूज भी इनहेंस करी है. Sikkim's natural farming is a model for entire country, and Modi ji is playing football. Right? He put a video, the Bharatiya Janata Party put a video in their Twitter accounts that he's playing football. And I don't think कि वो 1 मिनट में शूट हो गया होगा. That must have taken like 1 to 2 hours, because this is the kind of PR our Prime Minister doing while like eating jal muri, right? Wandering around the Hooghly River, visiting marriages of some people, right? But he doesn't have time to go to Manipur and discuss with the leaders. मुझे ये फोटो देख के ना बहुत बुरा लगा. Okay, technically अगर politics की बात करूं तो this photo is directly associated with the West Bengal election. West Bengal is their favorite sport is what we can say football. So he cannot play football in West Bengal because Achar Sanhita चल रही है. So he decided to go to Sikkim, Gangtok, right? And Gangtok में जाके उन्होंने क्या किया? Football खेला so that the voters can track. Right, not ignored, but they are closely monitoring the situation. That we cannot see any particular thing, any good particular output from there कि monitoring करने से क्या सही मिल गया, क्या अच्छा हो गया. So I think we need it, है ना? Yes. So overall अगर recent violence की बात करें, हमने I guess 3 4 दिन पहले डिस्कस किया था. So 7th of April से मणिपुर में एक fresh ethnic violence, ethnic clash जो है वो start हुआ. When people actually what we can say, killed sleeping kids. Yes, there was a piece of BSF personnel जिनके बच्चों को रात में सोते हुए जिन पे अटैक हुआ, and they died. And from there, the fresh wave of unrest in Manipur started, right? And उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो on 25th of April को जो ये लास्ट न्यूज़ेस आई हैं, राइट, दैट इज उखरुल अटैक. ये रोज हो रहा है. A violent encounter in the Ukhruk district left at least 3 people dead and 5 injured. Right, so 3 dead, 5 injured. 26th of April की बात करें तो 26th of April को the Imphal protest. So people decided to go on a protest, and there was a clash between the CAPF and the people, where they were saying that you failed as an administration, you failed to give us security. The protest was huge, right? And then security forces demonstrated certain tear gas to dissipate crowd. So 30 to 50 people actually injured. Talking about the next day, इसके बाद से हमारे पास अपडेट नहीं है, मेरे पास अपडेट नहीं है. 27th of April, right? That is Kangpoki. मैं नाम लिख देता हूँ. Abduction. So reports emerge of a mob abducting 3 family members of Indian Army soldiers in Kanpoki district. So यहाँ पे abduction हुआ है एक क्या कहना चाहिए मिलिट्री पर्सनल की फैमिली का, राइट. एंड जो विष्णुपुर है, जो चाचुंदापुर है, राइट, सॉरी चुराचांदपुर है, वहां पे ब्लॉकेड है 2 वीक से, इंटरनेट शटडाउन है, एंड देर आर नो पर्टिकुलर न्यूज दैट इज कमिंग आउट, राइट. 27th of April को ही लास्ट हमने डिस्कस किया था कि होम सेक्रेटरी जो है गोविंद मोहन, ही इज रिव्यूइंग द सिक्योरिटी सिचुएशन, राइट. And there is a security vacuum, so he decided to put 8,500 CAPF personnel to the ground, more personnel to the ground, है ना, जो कि वेस्ट बंगाल से विड्रॉ किए जाएंगे, सॉरी, जो कि अलग से बोलेंगे. I must see the report. I guess 8,500 personnel of CAP were withdraw from the Manipur for the West Bengal election. Yes, I remember this. उस पे मैंने काफी वो भी लिखा था.
फिर सिविलियन एजुकेशन जो कोऑर्डिनेटेड कमेटी है मणिपुर इंटीग्रिटी की, दे हैव scheduled a public convention on the 3rd of May to discuss the next course of people's movement and evaluate the government response to their demand. Correct. And the security forces recovered recently the cache of weapons in the Churachandpur, including AK-47 grenades, mortar shell, while dismantling illegal bunkers. तुम सोचो मतलब AK-47 जो है वो हमारे सिटीजन्स के पास दिस इज समथिंग जो कि एक बहुत ही नेगेटिव वो है तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट वी एज अ सिटीजन वी नीड टू टेक सम रिस्पांसिबिलिटी ऑन दिस इफ वी आर नॉट गोइंग टू डू protest remember Aravali it was a peaceful protest and the government has to change the decision the judiciary has to change the decision of the definition of Aravali तो जब तक हम अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं करेंगे बाय एनी मींस तब तक मणिपुर में आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी मेजर डिस्कशन तो लेट्स be a good citizen and talk about it right and let's discuss the second most important news for the today yes for me the most important news was simple that was Manipur यस अगर आप मणिपुर नहीं देख सकते हो तो फिर बाकी सारी न्यूज़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है सो देयर वाज अ प्रॉपर नोलन टाइप शॉट व्हाइल डोंट आस्क दक्ष मतलब मैं नहीं चाहता कि मुझे यूएपीए लगे बट ये बहुत ही आई मीन कम ऑन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ द आवर लीडर शुड ग्रो अप आई मीन एक साइड वो राघव चड्ढा जी हैं उनका फॉलोवर कम हुए तो ही गॉट पैनिक ही पुट अनदर right, this is what is happening. What's the matter with Manipur and the Israel tribe? So there is a tribe in Manipur, है ना? मुझे exact नाम तो उसका नहीं याद है. Which was displaced from the original promised land that is Israel. So Israel जो बसाया गया था, Israel was made, right? Why I guess 10 or 11 tribes. One of them tribe that is Masamei or Masani, ऐसा कुछ नाम है, that migrated from there to Central India to the northeastern India. So Manipuri tribe, their original ethnic particular origin is from Israel. So Israel want that particular tribe back to their promised land. So recently, I guess 300 personals were carried in a plane to there, and next few years there are going to be a majority of tribe people who are going to shift from India to Israel. Yeah, right? So that is the matter. मुझे एग्जैक्टली रिलीजियस कंटेक्स्ट याद नहीं है बट देर वर 9 or 10 ट्राइब्स जिन्होंने वो किया था जिसमें से अपार्ट फ्रॉम वन अदर्स आर लिविंग देयर सो लेट्स डिस्कस द लेटेस्ट change in the what we can say oil cartel या my गुरुजी लक्ष्मी सर जो थे मेरे गुरुदेव वो कहा करते थे इसे ये जैसे ड्रग कार्टेल होता है वैसे ओपेक एंड जो होते हैं ओपेक और ओपेक प्लस राइट दे आर एक्चुअली द ऑयल कार्टेल एंड एक्चुअली they mentioned the word cartel actually right so एक बड़ा वो है शौक है that is United Arab Emirates they decided कि they are exiting from the OPEC and OPEC Plus, and this will actually weaken the bargaining power of the OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. So, what exactly is the scenario? तो मैं बताता हूँ आज से कुछ 50-60 years back there were certain tensions around the world. Oil price जो है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो रहे थे. So they decided कि अगर हम सब ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री एक साथ आ जाए right and if we come together and we will set the price of oil then nobody can pressurize us so they decided to make a group that group was called as OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries then there were some other particular countries but there were 5 countries originally which made OPEC later on I guess there are 10 countries and now OPEC plus is there जहाँ जो 2016 में आया था पिक्चर में जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जो वो होना चाहती हैं क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करना चाहती हैं दे आर पार्ट ऑफ इट दिस इज नॉट ऑफिशियल ग्रुप बट दे हैव अ काइंड ऑफ फोरम जिसके थ्रू वो प्राइस रेडी करते हैं देन उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाते हैं सो दैट इज व्हाट वी नो
ओके, सो अगर आप थोड़ा सा न्यूज में आ जाते हैं वापस. सो यूनाइटेड अरब अमीरात अनाउंस इट विल लीव ओपेक एंड ओपेक प्लस, द वाइडर ओपेक प्लस alliance from the 1st of May 2026. Right, so 1st May 2026 से they are going to exit. The departure ends the country's membership of nearly 60 years and it represents a major shift from the global energy dynamic as the UAE is group's third largest producer. तो यूएई जो था वो ग्रुप का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था. कल बीबीसी ने एक बहुत प्यारा आर्टिकल दिया था. वेनेजुएला हैज हाईएस्ट ऑयल, है ना. सॉरी, यूएसए नाउ हैज हाईएस्ट ऑयल, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल. अगर तुम जोक समझ गए तो ठीक है. देन कम सऊदी अरेबिया, देन ईरान, देन उसके बाद यूएई, सॉरी इराक एंड देन यूएई. सो ईरान तो है नहीं पार्टी में. So Saudi Arabia, Iraq and UAE, these were the three major क्या कहना चाहिए, व्हाट वी कैन से, प्रोड्यूसर्स. और उसमें से एक जो है वो जा रहा है. तो उन्होंने जो रीजंस दिए हैं फॉर एग्जिट, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं. राइट, जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत अच्छे से वो किया. द यूएई हैज लॉन्ग शेफ्ट अंडर द ओपेक imposed production quota, limited its output roughly to क्या कहना चाहिए 3.2 मिलियन बैरल पर डे. सो जो प्रोडक्शन फ्रीडम है वो नहीं थी इनके पास, ये कह सकते हो. यस, क्योंकि द थिंग इज कि इफ वी आर प्रोड्यूसिंग मोर वी आर गोइंग टू सेल मोर. सो दे एक्चुअली restricted the production quota so that everybody get a chance to get the money from the oil. राइट, सो प्रोडक्शन फ्रीडम नहीं थी. एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने चीजों को क्या किया, थोड़ा सा नेगेटिवली कंसिडर किया. सो 3.2 मिलियन बैरल पर डे जो है they were producing, while the it can while leaving it can utilize significant spike capacity to target the goal of 5 million barrel per day by 2027. 3.2 million barrel per day जो है वो अभी प्रोड्यूस कर रहा था. बट इफ एवरीथिंग गोज वेल इट कैन प्रोड्यूस 5 मिलियन बैरल पर डे. मतलब वो काफी हद तक क्या हो रहा था, मतलब क्या कहना चाहिए, लॉस में जा रहा था. तो दे डिसाइडेड कि हम वो प्रोडक्शन बैरियर, प्रोडक्शन फ्रीडम जो है उसके अगेंस्ट जाएंगे. द नेक्स्ट वन इज नेशनल स्ट्रेटेजिक विजन. सो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मूव भी कह सकते हो. एनर्जी मिनिस्टर सुहेल अल मोजरोई स्टेटेड दैट the decision follow a review of UAE's long-term economic vision, aiming to aiming to be unconstrained in the meeting of future global energy demand. तो उनका ये मानना है कि हमारा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी है. एंड द नेक्स्ट वन इज जियो पॉलिटिकल फ्रिक्शन, दुनिया में जो हो रहा है उसके कारण. यस, द थिंग इज कि सऊदी अरेबिया, है ना. मैंने तुम्हें बोला कि सऊदी अरेबिया जो है दैट इज द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. Getting so there is a shadow, there is an influence of Saudi Arabia in this particular group, and every country can feel it. राइट, देर इज होता ना कि एक ग्रुप में एक बुली है, एक दादा टाइप का आदमी है जिसके सब के सब लोग क्या करते हैं, वो करते हैं, एग्री करते हैं कि नहीं भाई इसकी माननी पड़ेगी, इसकी माननी पड़ेगी. दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग. सो एक एक्सपर्ट ने अल जजीरा में लिखा हुआ है, द मूव्स रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग रिफ्ट विद द सऊदी अरेबिया ओवर द रीजनल इन्फ्लुएंस and in the oil policy. Additionally, the Emirati official expressed the disappointment with the historically weak political and military support from the fellow Gulf allies during the regional conflict. सो जो जितने अदर गल्फ कंट्रीज थी उनकी तरफ से अभी के जो वो हुआ है, इशू हुआ था ईरान के साथ, उसमें दे डिडंट गेट एनी पर्टिकुलर सपोर्ट, बहुत ज्यादा उनको नहीं मिला. सो दे डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम दैट. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर मैं उसकी बात करूं, तो कल से मतलब शाम से जब से न्यूज आई तब से अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं अपने इम्पैक्ट मतलब अपने एनालिसिस जो है वो लिख रहे हैं. दे आर राइटिंग ऑन ट्विटर, दे आर राइटिंग फॉर द न्यूज़पेपर, दे आर सिटिंग ऑन अ डिबेट टू डिस्कस थिंग्स. सो अलग अलग जगह से जो रिपोर्ट्स आई मैं उसकी बात कर देता हूँ. फॉर नाउ अगर बात करें तो इमीडिएट जो शॉक है, राइट, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा. इमीडिएट शॉक इसलिए ज्यादा नहीं होगा बिकॉज यूएस ही हॉर्मुज बंद है ना. हमारे चाचा ट्रम्प और ईरान की तरफ से जो मुंह फुलाए एक दूसरे से बैठे, बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट, देर आर गोइंग टू बी लाइक नॉट मेजर व्हाट वी कैन से, इमीडिएट शॉक नहीं होगा.
So analysts from CNBC, CNN suggested the short-term impact of the global price will be muted because the Strait of Hormuz remains largely restricted due to ongoing war, which already caps export regardless of the membership status. So आप कितनी के member हो नहीं हो, the Strait of Hormuz is closed, and the Strait of sorry, if the Strait is closed, your export is closed, right? Second, they said that this is a blow to OPEC power. Right, so OPEC की एक bargaining power होती थी. I mean, think about it. There are 13, 14 people who produce majority of wheat. Let's say all the wheat, and others are producing small amount of different what we can say grains. So if everybody wants to eat chapati, they are dependent on those 13 people, right? And those 13 people together can make a very large bargaining power, very strong bargaining power. Okay, now if one member decided कि नहीं यार मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, so let's say the OPEC people are giving the fuel for the 100 rupees per barrel, and UAE was like कि ठीक है यार छोड़ो तुम उससे 100 छोड़ो, मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हें 95 में दूंगा. So definitely majority of country will shift to the cheaper oil. So यहाँ पे चीजें जो है थोड़ा सा कमजोर होगी. OPEC की जो bargaining power है, राइट, जिसके थ्रू वो मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं ऑयल प्राइस को, वो थोड़ा सा कमजोर तो होगी इससे. Right. And the next one is US. Yes, USA जो है वो सऊदी अरेबिया का बहुत अच्छा दोस्त है. एंड सऊदी अरेबिया को उसने हमेशा से यूज किया है एज अ प्रॉक्सी इन द मिडिल ईस्ट रीजन. एंड इसी कारण ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, नुकसान में या बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो. That there are measured like there are several times when Donald Trump especially mentioned that this particular group is having influence in the oil market. They are artificially inflating the prices of oil. So the US and other countries which are buying oil from them, they are paying more to them. So when the OPEC and their power to bargain will decrease, definitely USA will be very happy. एंड सऊदी अरेबिया, if we are talking about ओपेक के जाने के बाद सऊदी अरेबिया जो है वो मतलब थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंस मे बी द ग्रुप में इंक्रीज हो, बट फ्यूल कैपेसिटी दूसरी चीजें तो कमजोर होगी, तो वो यूएस के लिए फायदा ही देगा. तो यूएस को ऐसा कोई खास वो नहीं है जो वो होगा क्या कहना चाहिए इशू करेगा, राइट. अब 11 एक्टिव मेंबर्स रह जाएंगे अगर मैं बात करूं तो ओपेक में. दैट इज अल जजीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गार्गोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला. ओके, सो अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं ओपेक और ओपेक प्लस के बीच में कि क्या है. सो अगर मैं ओपेक की बात करूं तो ओपेक वाज established in 1960, right? And there were five founding members, which includes Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela. राइट, दीज वर द कंट्रीज जिन्होंने मिलके क्या किया, स्टैब्लिशमेंट किया था ओपेक का. इसका हेडक्वार्टर जो है आई गेस वियना में है, और 1865 से वियना में ही है. आई गेस 1865 के पहले जेनेवा में था कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद वियना में है, तब से आज तक वियना में है. करंट 11-12 मेंबर्स है. अप्रैल 2026 की बात करें इंक्लूडिंग यूएई, तो बाकी सारे मेंबर्स मैंने गिना दिए थे. रिसेंट जो एग्जिट्स हुए हैं अगर बात करूं ओपेक से, तो जो एग्जिट्स हैं दैट इंक्लूड्स अंगोला इन 2024, राइट, यूएई इन 2026 अप्रैल. दो कंट्रीज जो है उन्होंने छोड़ दिया था. अगर फॉर्मर मेंबर्स की बात करें तो कतर ने 2019 में ही तो छोड़ दिया था, एंड इंडोनेशिया की 2016 में क्या कहना चाहिए जो वो थी मेंबरशिप थी वो सस्पेंड हो गई थी. और कतर के साथ प्रॉब्लम गैस प्रोडक्शन के कोटा में था. कतर इज हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस रिसोर्सेज, राइट. तो दे वर लाइक यार जब मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, सेम रीजन दैट यूएई डूइंग, right. And objective was quite simple, the coordinate the petroleum policy among the member to ensure the fair and stable price for the producers and a steady supply for the consumer and a fair return to the investors. OPEC plus की बात करें तो OPEC plus was established in 2016, right. OPEC plus का अगर वो करें तो this is also referred as the Vienna group, right. क्यों वो बताता हूँ. To counter the falling oil caused by the surge in the US oil production, right. शेल ऑयल जो था यूएस का वो प्रोड्यूस हो रहा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, तो फॉलिंग ऑयल के जो प्राइस थे वो नीचे जा रहे थे, तो उसको काउंटर करने के लिए दिस इज अ कोएलिशन
consisting the core OPEC member and 10, 11 non-OPEC member. ठीक है। अब इसमें रशिया, कजाकिस्तान, ब्रूनेई, बहरीन, अजरबैजान, आई गेस मेक्सिको भी है, नॉर्दर्न अफ्रीका से ओमान, साउथ सुडान, ये सारी कंट्रीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ कोएलिशन, राइट। ब्राजील ने रिसेंटली ओपेक प्लस ज्वाइन किया था एज एन ऑब्जर्वर कंट्री। एंड अगर मैं ओवरऑल फैशन की बात करूं तो ओपेक प्लस कंट्रोल्स 60% ऑफ टोटल ऑयल सप्लाई, जो डेली बेसिस पे लेजिट मार्केट में जाता है। तो ये चीजें हैं। इंडिया के लिए इम्पैक्ट होगा, इंडिया के लिए थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि इंडिया जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है व्हेन इट कम्स टू ऑयल। एंड इंपोर्ट्स के मामले में 84%, 85% ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो इफ देर इज अ शॉर्टेज फ्रॉम दैट साइड, तो ये थोड़ा सा चीजें तो होगी, है ना। तो यस, इंपोर्ट के कारण हम थोड़ा परेशान तो होंगे, बट हाँ, देयर आर चांसेस कि वी कैन क्रैक अ बेटर डील विद द यूएई, क्योंकि ईरान और रशिया के साथ हमें सस्ता तेल नहीं मिल रहा है। तो दिस माइट हेल्प अस। तो ये एक और पर्टिकुलर चीज है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जल्दी जल्दी सॉर्ट हो जाए। सो दिस वाज व्हाट द ओपेक एग्जिट ऑफ यूएई, टॉकिंग अबाउट द थर्ड इशू, है ना, जो मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क के फॉर्म में छोड़ रहा हूँ। दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइस एवर सॉ द लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर पेपर, बट एससीओ जो है वो क्लैट के एग्जाम में मैंने 2 बार देखा हुआ है, राइट। दो दिस इज जस्ट अ डिफेंस मिनिस्ट्रियल समिट, दिस इज नॉट द मीन्स पर्टिकुलर समिट, बट हाँ, समिट तो है, राइट। तो मेक श्योर करो कि ये पर्टिकुलर समिट तुम थोड़ा सा कवर करो। एंड नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द एससीओ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, सो दक्ष का कहना है, बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप साइन ऑन यूएस डॉलर फ्रॉम द जू है। हाँ हाँ, अरे तुम सिर्फ साइन की बात कर रहे हो, आई वाज थिंकिंग कि ये पूरा का पूरा अपनी ही फोटो लगा के भेज सकता है। खैर, दैट वाज फॉर यू, है ना। ये होमवर्क है तुम्हारा। मेक श्योर करो कि एसईओ अपनी तरफ से जितना हो सके उतना क्लियर करके आना, जिससे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करें कि इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स में, हाउ दिस कैन बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियाज पॉजिटिव पॉलिटिक्स अगेंस्ट द एंटी टेररिज्म एंड रीजनल स्टेबिलिटी। इन सब पे डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ तुम्हारा ये होमवर्क है। एंड लेट्स डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, है ना, जो हम पिछले 1.5 महीने से डिस्कस करें। आई गेस मार्च पूरा हो गया है, अप्रैल इज ऑलमोस्ट एंडिंग, सो 2 मंथ्स फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स वी आर डिस्कसिंग, दैट इज वेस्टर्न एशियन कॉन्फ्लिक्ट या यूएस ईरान जो वॉर है उसके बीच में अपडेट। क्या अपडेट्स हैं उसकी बात करें। फॉलोइंग द अपडेट्स अगर मैं बात करूं तो यूएस एंड ईरान हैव stalled despite a new approval from the Tehran to reopen the Strait of Hormuz, है ना। So there is a new approved plan that is being proposed by the Iran कि भैया हम कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकते हैं, नेवल ब्लॉकेट खोल सकते हैं, इन चीजों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि ही इज नॉट हैप्पी विथ यू। भाई, तू फूफा नहीं है ईरान का। आई मीन, why they will make you happy? Your happiness lies on your election, all right? Your very long tongue कि तू भाई कुछ भी बोलेगा और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सो यस, ईरान के साथ डील करने के लिए यू डोंट नीड टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी मोर लॉजिकल कि व्हाट इज समथिंग जो ज्यादा बेहतर हो सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू से। सो बट इट इज सेइंग कि ईरान, सॉरी, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी। सो जो डेवलपमेंट्स है उसकी बात करूँ, सबसे पहले जो डिप्लोमेसी है दैट इज somehow what we can say it's a stall phase. A planned meeting in Islamabad was delayed after Trump canceled the trip, right, stating that the Iran is taking too much time. फिर हॉर्मूज का जो प्रपोजल आया है उस पे भी अब तक इन्होंने डिस्कस नहीं किया है। द ईरान ऑफर्ड टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अंडर 3 कंडीशन: lifting the US naval blockade, ending the regional military escalation, and third one is postponing the nuclear talks for the later stage. तो सबसे पहले उसका बोलना है कि भैया यूएस नेवी जो है वो निकल जाए यहाँ से। सेकंड, लेट्स एंड द वॉर, राइट। थर्ड, जो तुम्हारा डिस्कशन हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके है वो हम बाद में करते हैं, क्योंकि हम अभी नहीं मान रहे हैं, हम अभी नहीं मान रहे हैं।
So let's discuss this. There are chances कि when we'll discuss about it on later, we can get into a logical stage जहाँ पे हम एक दूसरे के कुछ क्या कहना चाहिए कॉम्प्रोमाइज करके कुछ एक कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हैं. ईरान आर्मी अभी मिलिट्री का जो पर्टिकुलर स्टांस है वो भी जान लो. Iranian army warns that the war is not over and has updated its target list, while US military continues to enforce a blockade and having redirected 39 vessels to the date, according to the SETCOM. UAE का जो OPEC का एग्जिट है, that is also a kind of regional fallout of this. क्योंकि उसको बहुत सारा चीजें जो है प्रॉब्लम हो रही थी एंड उसकी सोवरेनिटी फॉर देयर ऑयल ये भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी. तो मैंने बोला जैसे कि देयर आर चांसेस कि दे कैन ब्रेक अ गुड डील विद देम. चांसेस है कि वो हो सकता है. द ब्रेंट क्रूड ऑयल इज स्टिल 109.34 डॉलर पर बैरल, राइट. ये अभी की रिपोर्ट है जो मेरे पास है. एंड लेबनान, राइट. मैं अब तो मतलब ये पर्टिकुलर कहानी है कि मैं बोलना भी नहीं चाहता इसराइल के लिए. I mean, there is a ceasefire that is between US and Israel, but still वो ceasefire जो है उससे कोई मतलब नहीं है. Despite a broader ceasefire, Israel strike in the southern Lebanon, reportedly killing 50 people today, with Israel targeting Hezbollah tunnel network. ऐसा उसने बोला है, right? So ये चीजें वो कर रहा है. This was the update for the today. मणिपुर हो चुका है अपना आज का टॉपिक. So this was the newspaper, most important newspapers, most important article. थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें थोड़ा पढ़नी चाहिए. So सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ हिट्स 5 months लो ऑफ 4.1%. व्हाई दिस लो? इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. देर इज प्रोडक्शन इशू, राइट. देर इज द वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट, राइट. सो जो हमें एनर्जी चाहिए, जो हमें प्रोडक्शन के लिए चीजें चाहिए, उसमें कमजोरी है तो प्रॉब्लम तो होगी. वेस्ट बंगाल में आज जो है दैट इज सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन इज देयर, right. So if anybody is listening to me from West Bengal and they are voting today, make sure to vote for the right candidate, which talks about your area's development, your constituency's development. Do not vote for a single face or single party face, क्योंकि इससे हमारा डेमोक्रेसी जो है, हमारी डेमोक्रेसी जो है कमजोर होती, वीक होती है. सो वोट फॉर द राइट कैंडिडेट, ठीक है. इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता. वोट तो तुम पार्टी को ही करोगे. मैं ये न्यूज़ डिस्कस करना चाहता था, फिर आई वाज लाइक कि व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस. हनीमून मर्डर केस, अक्यूज गॉट द बेल. आइए देखिए, जानते हैं कैसे हनीमून में मर्डर करने वाली महिला ने, राइट, अपने आप को बेल लेके जेल से बाहर निकाला. सॉरी. It's voting day on my city today. Rishpanda, I hope you will vote for the right candidate if you are voting, and if not, make sure your family members, whoever are voting, vote for the right candidates. Getting my point? बहुत जरूरी है बेटा सही कैंडिडेट को वोट करना. Whenever we are voting wrong, whenever we are voting for the party for one face only, for example, बीजेपी में एक ही चेहरा, that is मोदी जी. कांग्रेस में एक ही चेहरा, that is राहुल गांधी. टीएमसी में एक ही चेहरा, that is ममता दीदी, राइट. आम आदमी में बचे हैं क्या चेहरे? केजरीवाल इज देयर, केजरीवाल इज देयर, राइट. सॉरी. शिवसेना में एक ही चेहरा है. तो मेक श्योर टू वोट फॉर द राइट कैंडिडेट. प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग फाउंड इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट. अब ये देख लो यार, मेरे पास अब नया वो आ गया, क्या कहते हैं, नई बकेट लिस्ट आ गई टू फॉर द घूमने फिरने के लिए. बिकॉज मैंने केरला में वायनाड में एक जगह है, राइट, वहां पे एक केव पेंटिंग्स केव वो करी थी, विजिट की थी. अब नीलगिरी में भी होगा. भीमबेटका तो मैं कई बार जा चुका हूँ, राइट. ईडी attaches assets of worth 3,000 crores for the Reliance Communication Bank fraud case. मतलब भाई के पास अभी भी 3,000 करोड़ के एसेट थे, राइट. यस.
जो फॉरेन लेंडर्स थे टोटल उसकी कुछ 40,000 करोड़ हैं जो अभी तक आउटस्टैंडिंग बैलेंस में, जो अभी तक इनने लौटाए नहीं है, राइट। यस। तृणमूल कांग्रेस अक्यूज्ड इलेक्शन कमीशन पुलिस ऑब्जर्वर फॉर द सीरियस मिसकंडक्ट। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है गाइस। बच्चे लोग, तुम लोगों में फ्यूचर में लॉ होने वाला है, तुम्हें ये चीज जानने की जरूरत है। देयर आर आईपीएस ऑफिसर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स, जिनको बुलाया गया है एज एन ऑब्जर्वर, right? Their duty is to observe, to make sure that everything is going to the what code of conduct, there is no misconduct, right? So that they can actually what we can say, uh, generate a proper democratic election. But the way these police personals are behaving, है ना, एक को यूपी पुलिस का सिंघम बुलाया गया। I'm not sure about it, but why people are glorifying a character like Singham? There is a procedure established by law. There is a law and order thing जो आपको फॉलो करना पड़ता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला जा रहा है उसको। एनकाउंटर इज itself a negative word for a democratic country, right? It's an extrajudicial killing. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये चीजें आगे ना हो। दिस इज समथिंग जो गलत है, राइट। राहुल गांधी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, ही वेंट टू अंडमान निकोबार, met Nicobar community, promised to fight against the infrastructure bill. Right, I still want to ask how you are going to fight, and after fighting, the strategic movement, the strategic क्या कहना चाहिए, गो अहेड जो था इस प्रोजेक्ट से, उसको कैसे शिफ्ट करोगे दूसरी जगह। दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू आस्क टू them. Hold all party meeting to build a conscience on the implementing of women's quota. अब भूल जाओ, अब नेक्स्ट इलेक्शन तक, इलेक्शन के पहले सरकार को याद नहीं आने वाली विमेन रिजर्वेशन बिल की। ओके, एक पर्टिकुलर बड़े स्टेट का इलेक्शन था जिसपे आनी थी, वो आ गई है। मैं ये बार बार देखता हूँ फोटो, है ना, नरेंद्र मेसी की, सॉरी नरेंद्र मोदी की, तो मुझे दुख होता है। ठीक। आ, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, है ना, कि वोटिंग और बाकी सारी चीजें उसके हाई होने से क्या क्या चीजें होंगी। A recusal test of the Delhi High Court failed. This is something that you know, Kevin Kejriwal and जो जस्टिस सूर्यकांता शर्मा थे उनके बीच में क्या हुआ, so उससे रिलेटेड है। मेक श्योर टू रीड इट। बैटल ऑफ बिल्स, यूएस वर्सेस ईरान, कौन पहले खोलेगा, कौन पहले गिव अप करेगा, इसी में चल रहा है। पहले तू, वो ना, पहले तू मार वाला केस। Crude oil import slips to 2 million ton on the January, 50% more costly. My friend, India's friend. मैं लेक्चर नहीं ले रहा इसलिए प्रिपरेशन छोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है भाई? रोशन, ऐसा नहीं है यार। कुछ टाइम तुम्हें लास्ट की, मतलब दूसरों से पढ़ने की जरूरत, अपने से रिवीजन करने की जरूरत होती है। तो मेक श्योर कि वो भी करो, ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। यूके पीएम्स फॉर्मर टॉप एट से सॉरी ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंडलसन। ये वही पर्टिकुलर मेंडलसन है जो चाचा ट्रम्प की एक फाइल में आया था, है ना, बाकी तुम समझदार हो। एप्स्टीन फाइल में इसका नाम आया था। फिलहाल यूएस में अपने क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, किंग चार्ल्स जो हैं वो विजिट कर रहे हैं स्टेट टूर में, तो उसकी न्यूज है। मेक्सिको कैप्चर्स द टॉप कार्टेल लीडर इन ग्रो ऑफ जेलिस्को क्राइम सिंडिकेट। बांग्लादेश के लिए अच्छी न्यूज है कि दे स्टार्टेड देयर फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, राइट, इन लैंडमार्क में। तो पहले जो न्यूक्लियर प्लांट है जो यूरेनियम फ्यूल्ड है उसका उन्होंने स्टार्टिंग करी है। Israel is using water access as a war weapon. अब तुम बता दो मुझे कि अगर, आई मीन, वी लिव इन अ कंट्री, वी बिलोंग टू दैट कंट्री, जहां पे अगर देर इज अ पर्सन फ्रॉम अपोजिट साइड, अगर वो वुंडेड है और ही इज थर्स्टी, तो हम उसे पानी पिलाते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं। वी आर द लैंड ऑफ महात्मा गांधी। एंड अदर साइड देर इज Israel, which is using water as a weapon. If we are not providing water to children, to the people, right? इससे ज्यादा गंदी बात क्या हो सकती है? And they are doing it, not for today. From last three, ये सबसे वो अटैक हुआ था अक्टूबर वाला, योम की पूरा वॉर की एनिवर्सरी में, तब से they are doing it with the Gaza.
right? Seven killed, dozen wounded after the Pakistani strikes in the Afghanistan province. ये अलग नहीं मान रहे, ये खुद ही लड़ रहे हैं. I mean, Pakistan is Pakistan. एक साइड they are trying to make peace between the US and Iran, दूसरी साइड they were like यार बहुत दिन से पीस करें, थोड़ा अफगानिस्तान पे स्ट्राइक मार देते हैं. Right. Iraq appoints a new as next PM amid the US pressure. सो नजीर अहमद जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बिजनेसमैन को क्या कर दिया है, एज अ पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, अली अल जैदी, राइट. एंड ही इज अ न्यू कमर. लोगों का ये मानना है कि ही इज नॉट एट ऑल हैविंग आइडियाज ऑफ हाउ टू रन अ कंट्री. देन मैंने कल का मैच नहीं देखा, सो आई डोंट नो. So this is the today's newspaper analysis. Have you seen yesterday's what we can say uh, current affairs weekly? Make sure to see it. Make sure to watch it, and do let me know. I started a new pattern, though the PDF wasn't very much clear. थोड़ा सा एडिटिंग का मुझे अभी वो नहीं था. मेरे नोट्स में, मेरे वन नोट में दैट वाज लुकिंग ग्रेट, बट व्हेन वी सॉ इन दैट डिजिटल बोर्ड तो वो इस तरीके से वर्कआउट नहीं किया. बट मेक श्योर कि एक बार देखें, एक बार नए पैटर्न से उस पर्टिकुलर वीडियो को देखें, एंड डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर चेंज दैट वी वांट, you want, right? And rest. This is it from my side for today, and I'll see you in the next session. Till then, have a great day ahead. मजे करें. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. See ya, guys. Good day.